वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डी लिस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ बाय इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 111 और रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को डी लिस्ट कर दिया है, क्योंकि ये पाया गया है कि ये पार्टीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई ECI ने तो देखा गया कि ये पार्टीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। इनमें से 3 ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी में पाई गई, मनी लॉन्ड्रिंग इन सब केसेस में पाई गई, तो उसका जो है स्टेटस वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से इलेक्शन कमीशन ने शेयर किया है ताकि इन्वेस्टिगेशन की जा सके और क्रिमिनल एक्शन लिया जा सके। तो अब हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती कैसे है। तो आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्टर करेगा। उसके लिए सेक्शन 29A जो है RPA का 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट RPA के अंदर जो है ECI के पास अथॉरिटी है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्टर भी करेगा और गवर्न भी करेगा। अब इस सेक्शन के मुताबिक एक पॉलिटिकल पार्टी को अपनी 30 डेज ऑफ फॉर्मेशन के अंदर जो है एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है टू सेक्रेटरी ऑफ ECI, और फिर अपनी पार्टी का जो है नाम प्रपोज करना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है एक नेशनल डेली न्यूज़पेपर में, 2 नेशनल डेली न्यूज़पेपर्स में एक्चुअली, और 2 लोकल डेली न्यूज़पेपर्स में भी। और 2 दिन दिए जाते हैं कि किसी को अगर ऑब्जेक्शन हो उस नाम के से रिलेटेड तो फिर वो सबमिट कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को विद इन द 30 डेज ऑफ दैट पब्लिकेशन। ठीक है, फिर जो है ये नोटिस फॉर पब्लिकेशन जो है वो EC की वेबसाइट पे भी डाला जाता है ताकि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो रेज कर सकता है। अब डी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? डी रजिस्ट्रेशन का होता है मतलब कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, तो उसको ECI जो है डी रजिस्टर कर सकता है, इनएक्टिव पार्टीज़ को डीलिस्ट कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन करने के लिए कह सकता है कि अगर इन केस जैसे कोई फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी का कोई केस हो, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ की जा रही हो अगर वो पार्टी, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन के लिए कह सकते हैं। अब अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी होती हैं? एक तो जो या तो वो हो सकती हैं कि जिन्होंने इनफ परसेंटेज ऑफ वोट्स सिक्योर नहीं किए हैं, या तो आपके असेंबली इलेक्शंस में या फिर जनरल इलेक्शंस में, या फिर अगर उन्होंने कभी इलेक्शन लड़ाई नहीं है, वो सिर्फ इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी हैं कि वो डोनेशन ले सके और उसका ऑफ कोर्स पैसे को मिसयूज़ कर सके, तो उस केस में जो है उनको हम अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ मानते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक वो 0.6% कम हुआ है और अब वो 4.2% रह गया है एज इन 2020-2021 ईयर। अब ये आपका PLF सर्वे जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कंडक्ट करती है, उन्होंने ये फाइंडिंग्स शेयर की हैं। तो इसमें कहा गया है कि सिर्फ 4.2% एडल्ट्स हैं जो कि जॉब्स फाइंड लुक कर रहे हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ में, और उनको जॉब नहीं मिल रही है। रूरल एरियाज़ में ये रेट है 3.3% और अर्बन एरियाज़ में ये 6.7% है, तो मतलब एवरेज जा रहा है जो वो 4.2% आ रहा है। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का जो रेट है वो 41.6% है, जो कि बढ़ गया है, पिछली बार ये 40.1% था। ठीक है, तो ये दैट्स अ गुड न्यूज़। और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो 39.8% हो गई है, जो कि पहले 38.2% थी। ये भी एक गुड न्यूज़ है कि मतलब जितने लोग एम्प्लॉयड हैं पॉपुलेशन में वो भी बढ़ गए हैं। माइग्रेंट्स जो है वो 28.9% जो है वो कहा गया है इस सर्वे के मुताबिक। अब हम देखते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता क्या है। तो हमारा जो CMIE है उनके मुताबिक लेबर फोर्स जो है वो क्या होता है, 15 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वो या तो एम्प्लॉयड हैं या फिर वो अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन वो काम करना चाहते हैं और एक्टिवली वो जॉब ढूंढ रहे हैं। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। ठीक है, तो एक तरह से डिमांड दिखा रहा है कि डिमांड फॉर जॉब्स इकोनॉमी में कितनी है। तो अब जो है इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है ऑफ कोर्स वो है कि वो एम्प्लॉयड हैं, ऑलरेडी उनको जो है वो काम कर रहे हैं। जो सेकंड कैटेगरी है वो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब कि वो अनएम्प्लॉयड हैं और वो काम करना चाहते हैं और वो जॉब को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट ढूंढते हैं तो वो LFPR का ही पार्ट होता है। सेकंड जो कैटेगरी है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैलिनिनग्राड। तो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के टाइम पर कैलिनिनग्राड भी न्यूज़ में आ गया, क्योंकि लिथुआनिया ने डिसाइड किया है कि रशिया जो लिथुआनिया से आपकी रेलवेज़ निकल रही है रशिया टू कैलिनिनग्राड, उसमें रशिया को अलाउ नहीं कर रहा है लिथुआनिया
पास ऑन करने के लिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ईयू ने कुछ गुड्स के ऊपर सैंक्शन लगाया है, तो रशिया अगर वो गुड्स यहाँ से उनकी कंट्री से पास करेगा, लेकर जाएगा, तो लिथुआनिया उसको लेके जाने नहीं देगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कैलिनिनग्रैड क्या है। तो कैलिनिनग्रैड रशिया की वेस्टर्न मोस्ट फेडरल एंटिटी है, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और 1 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो अभी हम मैप में भी देखेंगे इसको, एरिया को, आने वाले नीचे आप के जो है जब हम इस टॉपिक को और डिटेल में देखेंगे। तो अब ये पता होना चाहिए आपको कि ये 300 किलोमीटर दूर है रशिया से, और इसका कोई भी बॉर्डर जो है रशिया के साथ शेयर नहीं होता है। इसकी हिस्ट्री ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो सोवियत यूनियन ने अंडर स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, उन्होंने इस टेरिटरी को ऑलरेडी कब्जा कर लिया था। इसका टेरिटरी का नाम उस टाइम पर कॉनिग्सबर्ग था। और फिर उसके बाद जब बंटवारा हुआ, जब जो ये अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन जो विनिंग कंट्रीज़ थी, इन्होंने जब एग्रीमेंट करके बंटवारा किया कि ये कौन सी टेरिटरी किसके हाथ में आएगी, तो पॉट्सडैम एग्रीमेंट के तहत ये जो कॉनिग्सबर्ग है, ये जो है रशिया के हाथ में आई, मतलब सोवियत यूनियन के हाथ में आई, और इसको कैलिनिनग्रैड कर दिया गया। ठीक है, अब रेड आर्मी यहाँ पर अप्रैल 1945 से रह रही थी। उसके बाद जब पॉट्सडैम एग्रीमेंट के अंदर इनको कैलिनिनग्रैड मिल गया, तो इन्होंने इसको इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेंटर बनाने की कोशिश की। ऑलमोस्ट ज़ीरो इम्पोर्ट ड्यूटीज़, रिड्यूस टैक्सेस, ताकि इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा सके। यहाँ पर नेवल बेस भी बना दिया गया बेल्टिस्क नाम का। बहुत सारे सोवियत सेटलर्स यहाँ पर भेजे गए रशिया और बेलारस से, और जो यहाँ पर जर्मन लोग रह रहे थे उनको निकाल दिया गया, और रशियंस जो है या सोवियट्स जो है उनको यहाँ पर भेजकर रिपॉपुलेट किया गया कुछ। लेकिन फिर भी जो है जर्मनी का पास्ट यहाँ पर अभी भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आपके इमैनुअल कैंट हैं, उनकी ग्रेव यहाँ पर अभी भी एग्जिस्ट करती है। जो ये कैलिनिनग्रैड के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मतलब सेक्लूडेड है, वो ऑफ कोर्स आसपास की कंट्रीज़ में जाते हैं। लेकिन जब से ये पुतिन ने बैन लगाया है 2014 से, तब से क्या हो रहा है कि वो पोलैंड वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, तो इसलिए उनको जो है अपनी कमोडिटीज़ के लिए जो है वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, और लिथुआनिया और पोलैंड के थ्रू जो है वो अपनी जो है कमोडिटीज़ खरीद रहे हैं। ठीक है, सो अब लिथुआनिया ने बैन क्यों लगाया? तो लिथुआनिया का तो ये कहना है कि वो ईयू के सैंक्शंस को अधेयर कर रहे हैं, जैसे कि एडवांस टेक्नोलॉजी, मेटल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कोल, इस सब के ऊपर ईयू ने बैन लगाया है। तो इसीलिए लिथुआनिया उस सारे गुड्स को अपनी टेरिटरी से रशिया के थ्रू जो है वो जाने के लिए इजाज़त नहीं दे रहा है। अब कैलिनिनग्रैड जो है वो 2 जगह से डिपेंडेंट है। एक तो रशिया के थ्रू सप्लाई आती है ना, ये देखो, ये रशिया है, रशिया से जो है सप्लाई आती है एक तो लिथुआनिया के थ्रू, यहाँ पर रेलवे राउट है, और एक आती है बेलारस के थ्रू। ठीक है, तो 2 जगह से सप्लाई आती है। अगर उसमें से लिथुआनिया के थ्रू जो सप्लाई आ रही है, अगर उसको बंद कर दिया जाएगा, तो ऑफ कोर्स कैलिनिनग्रैड जो ये रशिया का पार्ट है, इसमें दिक्कत आनी शुरू होगी, सप्लाईज़ नहीं आ पाएंगी। तो वही गवर्नर जो हैं आपके इधर जो है कैलिनिनग्रैड के, वो ये कह रहे हैं कि लगभग हाफ ऑफ द गुड्स जो इंपोर्ट हो रहे हैं वो इफ़ेक्ट होंगे अगर लिथुआनिया जो है वो सप्लाईज रोक देगा तो। ठीक है, अब बाल्टिक कंट्रीज़ जो है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया, इनको ये डर लग रहा है कि रशिया जो है यूक्रेन के बाद इस सुवाल्की गैप, ये सुवाल्की गैप क्या है कि यहाँ पर भी रशिया, ये आपका बाल्टिक सी है, तो ये जैसे हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वैसे यहाँ पर सुवाल्की गैप है बेलारस और रशिया के बीच में, यहाँ पर कैलिनिनग्रैड और बेलारस के बीच में। अगर इसको रशिया कंट्रोल कर लेता है तो रशिया विल बी एबल टू कट ऑफ ये 3 कंट्रीज़ जो है ईयू के साथ इसका कट ऑफ कर देगा, जबकि ये तीनों कंट्रीज़ नेटो और ईयू का पार्ट हैं। तो यही इनको डर लग रहा है कि अगर कभी ऐसी ये यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट अगर स्पिल ओवर हुआ, तो इन तीनों का एक्सेस जो है वो कट ऑफ कर दिया जाएगा, और नेटो जो है वो इनको हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, डिमोलिशन ड्राइव एंड इंटरनेशनल लॉ। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है बुलडोजर्स का यूज़ करके इलीगल प्रॉपर्टीज़ को जो है प्रोटेस्टर्स की वो जो है ढा रही है। तो उसमें एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये जो एक्ट है ये इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है। तो अब इसमें आपके जो है उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2020 के तहत जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ये एक्शन लेती है। लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हमारे आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू हाउसिंग एक राइट है,
और जो है आर्टिकल 25 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, उसके अंदर भी ये राइट मेंशन किया गया है। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300A जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी भी हमारा एक ह्यूमन राइट है, लीगल राइट है। इसको भी जो है वायलेट करता है ये आपका उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 2020। फिर आर्टिकल 11.1 ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स जो है वो भी वायलेट हो रहा है इस एक्ट द्वारा। और इवन यूएन का ह्यूमन राइट्स ऑफिस कहते हैं कि राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग भी जो है वो भी एक इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन राइट्स का। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट फोर्स्ड एविक्शंस भी जो है वो अगर कोई कर रहा है तो वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है। तो ये सारे जो है क्लेम्स किए जा रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ को कैसे वायलेट कर रहा है ये पर्टिकुलर एक्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। तो इसीलिए जो है इसके खिलाफ जो है एक्सपर्ट्स जो है वो एक आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं कि ये जो लॉ है ये ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्सोनेंस रखता है और ना ही हमारे इंटरनेशनल लॉ से के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडो कॉपैट। तो अब जो है 38th एडिशन ऑफ इंडो कॉपैट एक्सरसाइज जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कंडक्ट की जा रही है। और INS कारमुक जो है वो इंडियन नेवल शिप जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है और अंडमान और निकोबार कमांड से इसको लेके जाया गया है। ठीक है। तो 38th एक्सरसाइज है ये, साल 2002 से दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये कंडक्ट की जा रही है। और इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन जो दोनों कंट्रीज़ की है वहाँ पर ये दोनों नेवीज इसको कंडक्ट करती हैं। आपस में इंटरऑपरेबिलिटी, आपस में अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेंथन करना, ये सब काम है इनका। और इसी के थ्रू ही जो है ये इंडो कॉपैट एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग इन एग फिनोमेना। तो अब एक टीम ऑफ रिसर्चर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, उन्होंने यूनिक सेट ऑफ फॉसिलाइज्ड डायनासोर एग्स को देखा है और उसमें कहा है कि एक एग के अंदर उनको दूसरा एग मिला है। तो ये जनरली सिर्फ बर्ड्स के कंटेक्स्ट में होता है, ये रेप्टाइल्स के केसेस में अभी तक नहीं देखा गया है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि टाइटानोसॉरिड डायनासोर एग में एग इन एग देखा गया है। ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि रेप्टाइल्स और जो है आपके बर्ड्स या जिनको आप एवियन कह सकते हो, एवियन बर्ड्स, उनके बीच में भी जो है वो पहले कनेक्शन होता था। उसी जो है उन्हीं के बीच में जो कनेक्शन होता था उसी के ही जो है एक तरफ से ये डायनासोर्स भी उन्हीं कनेक्शन का ही रिजल्ट थे। तो ये एरिया कौन सा है जहाँ पर ये देखा गया है? तो मध्य प्रदेश जो है का एरिया है, बाग एरिया है मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर इनको ये एग देखा गया है। अब अपर क्रिटेशियस लेमेटा फॉर्मेशन है यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में, ये डायनासोर फॉसिल्स यहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं, वहाँ पर ये स्टडी कंडक्ट की गई है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. The first topic is delisting of political parties by Election Commission. So recently Election Commission of India has delisted about 111 more registered unrecognized political parties. So these parties have been discovered to be non-existent when the ECI started verification. Even 3 parties from these 111 registered unrecognized political parties were found to be involved in financial impropriety. So that's why EC has shared the details to Department of Revenue for necessary legal and criminal action against these parties. So what is the status and how the political parties are registered in India? So actually Article 324 of the Indian Constitution grants the Election Commission of India the right to or the authority to register political parties. So as per the section 29A of Representation of Peoples Act, all political parties are registered by the EC in India, and they're governed by the provisions of this act. And according to this EC, a party which wants to get registered must file an application within 30 days of its formation, and they must publish a proposed party name in at least 2 national daily newspapers and 2 local daily newspapers, and they should provide 2 days for submitting objections. Okay. And Commission will also provide 30 days. Commission will also provide 30 days for any submission of objections, and it will also publish the details on the ECI's website. So how the political parties are deregistered? So of course the EC has the power to register political parties under RPA, but it does not have the power to deregister political parties that are inactive. ECI can only delist the inactive parties and refer that matter to the central government for further action. So what are
these unrecognized political parties. So actually, there is certain criteria that at least 6% votes must be secured, two MLAs, or in case of that national party, four MPs must be elected. So there is a criteria which you may have read in your polity book. So if that criteria is not met, which would mean that they have not been able to secure enough percentage of votes, then they could be delisted. Also, if they have never contested any election, then also these unrecognized political parties are delisted by the Election Commission of India. So the next topic is unemployment in India. So unemployment rate in India has seen a decrease of 0.6%, and this rate has fallen down to 4.2% in 2020 and 21, according to the periodic labor force survey of 2020 and 21, which is of course released by the Ministry of Statistics and Program Implementation. So as per this survey, only 4.2% of adults who were looking for jobs could not get any work in rural and urban areas. So rural areas saw an unemployment rate of 3.3%, and urban areas saw an unemployment rate of 6.7%. So the average comes out to be about 4.2%. So as per this statistics, labor force participation rate has increased. Previously it was 40.1%, now it has increased to 41.6%. Okay, even the good news is that worker population ratio has also increased. So earlier it was 38.2%, now it is 39.8%. Migration stands at 28.9% now. So what is labor force participation rate? So labor force consists of people who are above the age of 15 years, and they are either employed. This is the first category. Or the second category is they are unemployed but they are actively looking for a job. So basically all those who are either working or who want to work, they are called labor force, but they are included in this labor force participation rate. So basically it is signifying the demand for jobs in an economy. Okay, those who are employed or those who are unemployed but they are willing to work, this is what is demand of jobs in economy. So even the unemployment rate that we generally talk about in news is derived from this labor force participation rate only. Okay, so those people who are actively looking for a job but they are unable to find it, so and that's why they are unemployed. This is they form part of the unemployment rate. Okay, so the next topic is Kaliningrad. So as Russia-Ukraine conflict is raging on, there is another conflict that has become that has come into news. Now this dispute relates to Kaliningrad. So you know that Russia has a territory. Let us see in this map. So this is Russia, this is Belarus, this is Estonia, Latvia, Lithuania. There is a small territory just above Poland. It is called Kaliningrad, and it is Russian territory. So Russia actually seized this territory after during the Second World War, and it was of course given to Russia by the Allies, America, Britain, etc. After the Second World War. And now Lithuania is saying, because Russia transfers its goods and from a railway line through Lithuania to Kaliningrad, but now Lithuania is saying that it will not allow Russia to transfer any goods to Kaliningrad, because the goods that Russia is transferring are actually sanctioned by EU, and Lithuania is a part of EU, so Lithuania cannot allow these goods to be transferred to Kaliningrad. So what is happening is that Kaliningrad is connected to Russia through two routes. Of course, Russia uses the Lithuanian territory. There's one railway line. There's another railway line that passes through Belarus to Kaliningrad. And this is not being so now if Lithuania stops these transfer of goods, then at least one of the lines would be choked, and Russia would have just one source to transfer the goods to Kaliningrad, that is from Belarus. So of course now Russia is saying that it is violation of the treaty according to which this railway line was built from Russia to Lithuania, and that's why it is brewing a conflict between Lithuania and Russia now. So anyways, now let us see the history and location of Kaliningrad. So Kaliningrad is basically the westernmost federal entity of Russia, and it occupies about 15,000 square kilometers of area, and it houses about 1 million people. It is about 300 kilometers away from mainland Russia, and it is sharing no borders with mainland Russia. So what happened is that after the Second World War, Kaliningrad, which was earlier called Königsberg,
it was captured by Soviet Union in 1945, and the Americans, British entered into a Potsdam agreement with Soviet Union, and they recognized that this territory belongs to Soviet Union now. So actually, it was of course taken control by the Soviet Union under Stalin, and after the prolonged siege by Red Army since 1945 April, Kaliningrad was transferred to Russia or Soviet Union of that time. So Soviet Union basically made it an industrial and commercial center. There is no import duties. Taxes have been reduced so that it can be created as a special economic zone. It was inhabiting German population initially, but the Soviet Union expelled that population and settled Russians and Belarusians there. Okay, but of course there is certain amount of Germanic past, and even the grave of philosopher Immanuel Kant is situated in Kaliningrad. Even the people are not secluded; they move here and there to the neighboring countries, and they are dependent for certain goods like coveted cheese, parmesan, and camembert. So basically, for luxury items, they are dependent on the nearby EU countries, and there is almost free movement of people between these countries. But since 2014, certain restrictions have been placed on Russia, and even and automatically it has been translated to certain restrictions on people of Kaliningrad. So this is causing concerns, and now that's why Russia has to transfer these goods by itself through trains, and now Lithuania is stopping those trains, and it is not allowing it. So this is causing a conflict between Russia and Lithuania. Okay, so Baltic states of Latvia, Lithuania, and Estonia, they are fearing that if Russia shifts its aggression from Ukraine next to these three Baltic states, it would first capture this Suwalki Gap. So Suwalki Gap is basically like the Siliguri corridor, which could cut off northeast India from the rest of the country. So this is basically if Russia through this Belarus, if it tries to capture this Suwalki Gap, then it would seclude these Baltic states, and because these Baltic states are already part of NATO, NATO would not be able to help these countries, and they, of course, Russia could take over these countries by military action. Then that's why they are fearing that, but still they are taking provocative actions against Russia. So I don't know why this is happening, why of course this Lithuania is taking such steps. So anyways, now let us see the next topic, which is demolition drive and international law. So certain experts have pointed out that the Uttar Pradesh government's bulldozing actions of illegal properties of protesters violates international law. So there is of course this Uttar Pradesh Recovery of Damages to Public and Private Property Act of 2020. So experts are saying that it is violating even the Constitution of India, that is the Article 21 of Indian Constitution, which says that we have a fundamental right to housing, and it is even violating the Article 25 of Universal Declaration of Human Rights. Even the Article 300A, that is the right to property under the Indian Constitution, is being violated by this particular act, and Article 11.1 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights is being violated by this act. Similarly, UN Human Rights Office is saying that right to adequate housing is a protection, also involves protection against forced evictions. So under this act, all these covenants are being violated as per certain experts. So in case you want to criticize this particular law, then you will have this data to point out in your answer. So the next topic is Indo-COPET. So 38th edition of India-Indonesia Coordinated Patrol Exercise is being conducted. So INS Karmuk is participating, and Andaman and a missile corvette based at Andaman Nicobar is participating in this exercise. So this is the 38th India-Indonesia exercise, and it is being conducted every year since 2002, and two navies are participating in it, and the aim is to strengthen understanding and interoperability between the two navies.
So the next topic is in egg phenomenon. So University of Delhi researchers have discovered a unique set of fossilized dinosaur eggs from Bagh area in Madhya Pradesh, Dhar district. So this is a rare phenomena because generally it occurs only in birds and it is never known in reptiles. But a titanosaurid dinosaur egg is found, and this basically shows that there has been certain connections between reptiles and birds, and their evolution had certain connections. So this area belongs to the upper Cretaceous Climata formation of central India, which is very known for the dinosaur fossils. Okay, so this egg phenomena is a new thing, and University of Delhi researchers have found this phenomena now. Okay, so these were our topics for today, and we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.